is dead as the function the function f such that x is mapped to x plus 1. Fx represents the output F of value. x. This is read as f of x. Yes, sir. F So when of x, yeah, represents the output values for the function f. Next, f of x is equal to x plus 1, f of 2 is equal to 2 plus 1, which is 3. The set of input values for a function is called the domain of the function. The set of output values for a function is called the range or image set of the function. all right, kids. So we will try out. We will, guys, जब हम first time करते हैं ना, it's kind of a discussion. So we will kind of discuss the first question. If everyone unmute, I will start from Kuvarsa. A Yes, sir. part, what is the domain of the function? Uh, If you don't know, it's okay. Say you don't know. कुछ I आ don't. जाए, you don't know. The question goes to Mr. Tan because आपने unmute किया था, मैंने देखा था. Yes. Sir, -1 is greater than equal to x, which is less than or equal to So 3. Kuvarsa, this will be the domain only. ठीक है? It's given कि x केवल -1 और 3 के बीच में हो सकता है. So this is nothing but the domain. Got it, everyone? Now B part, sketch the graph, guys. Sketch the graph, then answer for the C part. So who said like additional maths stuff? It is so easy, isn't it? Some of the teachers in our school they were saying, "You don't take additional So maths." they were saying you will fail. So they were Do you exaggerating. think it is tough? So Still easy. not right now. What do you think it is tough? So not tough. It is okay. Not tough. That tough. It is very much okay, बेटा. ऐसे ही है पूरा. कुछ नहीं है इसमें. Yes. But then why is it difficult? What did you say, Tanesh? So then why everyone is saying it is difficult? Because everyone knows that you will, listen to them. Oh. आपके एक्सटेंडेड में एक चैप्टर में 15 एक्सरसाइजेज है, 15 कंसेप्ट्स हैं. इसमें एक चैप्टर में एक ही कंसेप्ट. दिस इज द डिफरेंस. Yes, sir. 15 concepts. My goodness. I तो when I start the chapter, I तो keep on waiting ये कब finish होगा.
तो स्कूल के सर तो एक क्वेश्चन करा के सारी एक्सरसाइज होमवर्क दे देते हैं। But I also make you do, some सारे I when we do extended in the class, I make sure कि concept clear हो जाए और सारे difficult questions हो जाए class में. This is what we do. That is, I think, the correct approach. Difficult question आप class में कर लो, बाकी easy questions you can do it at home. All right, Parvi, it's correct. Let me write the name. Today, Ore is not there. Anish and Parvi, Kuvarsa. So we have to only make the graph right now. Yes, guys, graph भी बनाना है, एक straight line बनानी है, उसमें क्या है? And you Yes. have to, you don't have to make the complete straight line. You have to make the straight line in this domain only. Yes, sir. अगर आपने Yes, sir. ज्यादा Sir, बना done. लिया है तो आप उसको erase कर दो. From Yes, sir. you will keep it from -1 to 3. Sir, I've made the graph. Domain is Parvi, you have to use the signs. आपका आंसर करेक्ट था, बट प्लीज सेंड द आंसर अगेन यूजिंग द करेक्ट inequality signs. So end समय I asked the range, not the domain. I sent the range also, sir. Yes. So rest kids, send the range, please. तानिश बेटा, I asked the range, not the domain. रे, आपका साइन गलत है. And Kuvarsa, you can speak your answer now if you are done. Samir, don't text. Yes, sir. Yes, sir. So now is it fine? Yes. You understood your mistake, Ray? Yes. So Tanish and Kuvarsa. देख लें क्या guys? Should we see? Sir, I've sent. Yes, Kuvarsa, should we see the solution? Yes, sir. बेटा आपने लाइन ड्रॉ की, फिर आप अनम्यूट करो कुवर. बेटा this is Sir, is not my done. answer correct? Yes. So this is not done. कुवर आप अनम्यूट रखो बेटा. Yes, Please sir. keep on unmute only. So first of all, I will put x equal to -1 here. तो मुझे वैल्यू आ जाएगी -2 -1, तो -3 आ जाएगा एक पॉइंट. I will put x equal to 3 in this. I will get 5. मेरे पास 3,5 और -1, -3 आ गया. बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ले लिया एंड आई गॉट माई लाइन. I will join these 2 points and this will be my domain and this will be my range. So I got this answer, but I got confused between, so I didn't set XC. Okay. Now you understood? Yes, sir. See guys, when you will do, ये दूसरा chapter है. But even this thing should be known to us.
Okay, guys, this thing is from the second chapter, but I want to tell you, just give you an idea. So every quadratic equation, मैं आपको कोई भी quadratic equation दूं, suppose I give you 2x square plus 3x plus 5. Can you write it in this form? Wait, let me make it 7. Can you write it in this form? Yes. How will you write it in this form? Sir, we will write sir 2, then x. Have you learned the method completing the square for a quadratic expression? No, sir. Have you learned this method? No, sir. So, Kuvar, beta unmute rakh lo, please. Mr. Kuvar, please Yes, unmute rakh. So, and where are you looking, beta? sir, I was writing the question. Okay, okay. So, this method I will be teaching you in the second chapter, not a difficult method. But for now, I want to tell you that every quadratic equation can be written in this form. This is one thing you have to remember, that you can always write it like this. Now, let's say मेरी equation आई 2 times, अभी के लिए जो important है मैं वही बता रहा हूँ, 2 times x plus 5 whole square, x minus 5 whole square plus 7. Let's say मेरी ये आई. So, you remember when I told you the graph of a quadratic equation, I told you about vertex. Did I tell you? जो Yes. बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, -b/2a. याद आया गाइस? Yes. अगर मेरी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, कि जो वर्टेक्स होगी -b/2a होगी. बट अगर मैं इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दूं ही नहीं, मैं आपको इस फॉर्म में दूं, तो हाउ विल यू फाइंड a एंड b? वन थिंग इज, आप ओपन करोगे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखोगे, फिर -b/2a लाओगे. दिस इज वन मेथड. सेकेंड मेथड इज, आई कैन टेल यू डायरेक्टली, ये जो मेरी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको मैं वर्टेक्स फॉर्म ही बोलता हूँ. वाई डू आई कॉल इट अ वर्टेक्स फॉर्म? क्योंकि इसमें मुझे वर्टेक्स डायरेक्ट मिल जाती है. इसमें मेरी वर्टेक्स होगी 5,7. व्हाट विल बी माय वर्टेक्स? 5. 5,7. So for now, I want you to write this form. If your equation is of the form of a times x minus h whole square plus k, then h comma k is the vertex. देखो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, h comma k is the vertex. आप केवल ये इक्वेशन लिख लो and this लिख लो, then h comma k is the vertex. Don't write other things. This will be doing in the second chapter. Right now, just write h comma k is the vertex or will be the vertex. Suppose मेरी equation है 2 times x plus 5 whole square minus 3. Then my vertex will be what? My vertex will be what, Samay? First, sir, 5 minus 3. So No, 25 beta. minus 3, 25 Minus 5 5. minus. क्योंकि ये यहाँ पे जो फॉर्म है ना, h x minus h whole square है, तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा. तो साइंस विल चेंज. सो वर्टेक्स विल बी -5 -3. ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे गाइस. वी विल जस्ट डू दिस ओनली. ओके, रेस्ट डिटेल्स में दिस इज ऑल्सो आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा सो दैट यू गेट अ पिक्चर कि हाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्क्स. So 1.2 definition of a function. This. Now guys, you have to sketch the graph of this. तो पहला क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ग्राफ में guys, all you will notice here is that your domain starts from x is less greater than equal to 0. So what will you get when you put x equal to 0? Then f of x will be what? So 4.
f of x will be equal to Sir, 4. how 4 So 0 minus 2 Sir, 0 whole minus square, it is plus 3 also plus na 3. beta, So 7. 7. ये चीज क्लियर हुई? And when I put x equal to 6, what will be my f of x? 19. Sir, 19. 19. So, and what will be my vertex kuvarsa? Yes, sir. What will be my vertex? -2 and 3. बेटा इसका साइन रिवर्स करो, अभी ये -2 है, इसका साइन रिवर्स करो. 2, -3. 2,3 केवल 2, इस 3, sorry. 2, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. तो इसका साइन तो सेम एज इट इज होगा, इसका साइन रिवर्स हो जाएगा. -2 है तो क्या हो जाएगा? +2. सो वर्टेक्स विल बी 2, 2, 3. 3. 2, 3. अब व्हेन आई विल ड्रॉ द ग्राफ, मैं आपको दिखा देता हूं गाइस. आई विल ड्रॉ द ग्राफ. So see, they have written the what they have written that it is so this. चलो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ. Will have a minimum point at 2, 3, वही लिखा है उन्होंने virtually, and your graph will be like this. Yeah, like this. Now guys, अब हमें कैसे पता चलेगा कि देखो मेरे को 3 पॉइंट्स मिले. एक पॉइंट मिला ये, एक पॉइंट मिला ये, एक पॉइंट मिला ये. Then understanding the shape of the graph is also important, because आपका जो a है यहाँ पे आता है. अगर आपका a is greater than 0 means it can अभी right now a is 1, then graph will be straight u. If your a is less than 0, then your graph will be inverted u. Again, this is a part of quadratic equation, but थोड़ा थोड़ा we have to understand even for plotting. तो प्लॉटिंग में मुझे एक वर्टेक्स पता चला, एक ये पॉइंट पता चला, एक ये पॉइंट पता चला, एंड आई नो द शेप ऑफ द ग्राफ ऑल्सो. सो विद द हेल्प ऑफ शेप ऑफ द ग्राफ मुझे पता है मेरा पैराबोला ऐसा होगा, एंड आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस. नाउ व्हाट विल बी माय रेंज? माय रेंज विल बी बिटवीन वर्टेक्स एंड द टॉप पॉइंट. नाउ हाउ डू आई नो कि ये मेरा वर्टेक्स? बिकॉज वर्टेक्स जो होता है या तो मिनिमम पॉइंट होता है या मैक्सिमम होता है. इन दिस केस बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट यू, तो वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? ऑफ कोर्स मिनिमम होगा. अगर मेरा पैराबोला ऐसा होता तो वो मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है, समझ आ रहा है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल क्वेश्चन फ्रॉम हियर आल्सो. लेट्स Sir, can you explain that once again, that if the sign of the vertex one is minus, then how will बेटा सी, the sign फर्स्ट ऑफ come? ऑल मुझे 3 पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स मिले. ठीक है, एक ये मिला, एक ये मिला, एक वर्टेक्स मिला. और मुझे शेप भी पता है, बिकॉज मेरा a ग्रेटर देन 0 है, मेरा शेप ऐसा होगा. गॉट इट? ये समझ आया? Yes, sir. अब अगर मेरा a लेस देन Yes, 0 sir. होगा तो मेरा शेप ऐसा होगा. तब मेरा वर्टेक्स यहां होता शायद. अगर मेरा a लेस देन 0 होता तो मेरा वर्टेक्स यहां होता और मेरा शेप ऐसे होता. Yes, sir. मैं माइनस चेंज करके दिखाऊं आपको कैसे चेंज होगा? इसी इक्वेशन को माइनस करके दिखाऊं? आई विल Yes, शो यू. sir. सो व्हाट वाज द इक्वेशन? Yes, x sir. माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3. तो मैं इसको कर देता हूं -x-2 होल स्क्वायर प्लस 3. अब गाइस क्या होगा? टेल मी व्हाट विल बी द पॉइंट्स. पहले मुझे मेरे पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे एक्चुअली इसमें. मेरे जो डोमेन के पॉइंट्स हैं दोज Sir, आल्सो विल गेट minus. चेंज. तो मैंने Sir, पॉइंट्स, 2 मेरी and minus. डोमेन थी 3, तो फर्स्ट पुट 3. मेरा आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, ये तो रेंज है. व्हाट वाज द डोमेन फॉर दिस? डोमेन क्या था गाइस? ये 0 था. फ्रॉम 0 to 6 था डोमेन.
My domain was from 0 to 6. So put x equal to 0. What will you get here? Sir, 7. नो बेटा, अब माइनस है. अब मैंने इक्वेशन चेंज कर दी है. x इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आएगा? स्पीक द आंसर गाइस, क्या आएगा? 7 -1. Sir, 5. -1 बेटा. -1. This will become -4 plus 3. So it will be -1. Okay. Put x equal to 6, फिर क्या आएगा? तो -16 plus 3, which will be -13. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइस? Yes, sir. अब मेरा एक पॉइंट हो गया 0, -1. दूसरा पॉइंट हो गया when I put x equal to 6 it will be -13. ये पॉइंट हो गया. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया. वर्टेक्स मेरी क्या हो जाएगी? वर्टेक्स मेरी 2 3 रहेगी. तो मेरा जो ग्राफ होगा इट विल बी लाइक दिस. गॉट इट? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? अगेन Yes, हमने sir. सेकेंड चैप्टर के हमने लाइक 20-30% ऑफ द कंसेप्ट कर लिए. क्लियर हुआ गाइस? चलो, बिकॉज दीज आर ऑल प्री रिक्विजिट्स, मतलब मैं आगे नहीं जा सकता इस चैप्टर में. इफ यू वांट मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके आपने मोर देन 50% ऑफ द कंसेप्ट्स यू माइट बी नोइंग ओनली. नेक्स्ट, डू दिस क्वेश्चन. अभी ये नहीं किया था, ये डू दिस वन. Do you know how to find the equation of a perpendicular bisector of a straight line? Do you know? No, sir.
आपको नहीं पता m1 m2 इक्वल टू -1, द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1? No, sir. We have not done that. Okay. So Anvi also has sent the answer. Sir, are you asking y is equal to mx plus c? No beta, y equal to mx plus c is the equation of a straight line. पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x plus 3 एक लाइन है, उसका परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालो, then can you do that? So I am afraid guys सभी के आंसर्स रॉन्ग हैं. So I will explain guys. First of all, आपने point निकाला when you put x equal to 0. You got y is equal to 5. And when you put x equal to 5, you will get 4 square is 16. 16 plus 4 is 20. ये चीज clear है guys? So you got 2 points. Third point is the vertex, which is equal to 1, 4. तो मुझे ये 3 points plot करना है. 0 and 5, 5 and maybe 20. 5 closer बना देता हूँ मैं. 5 and 20 and 1 and 4 and 4. Zero. I put 0. I will get 5. I put 5. I got 20. I got 1 and I got 4. एक minute guys. Yeah. So I got these 3 points. So the graph, this will be the minimum point. This will be the minimum point. So the parabola will be something like this. Now why I have marked it in dotted? Because this is not in my domain. एक बार डेस्मोस पे देखें सेम चीज. x minus 1 whole square plus now if I have to restrict the domain, I will use this, and 0 is less than equal to x less than equal to 5. So this is how we restrict domain in Desmos. So this will be your graph. So the range will lie from what? What is the value of y here? What is the value of y here? Sir, in the vertex, it's 4. 4. 4. And the maximum value is 20. So 4 comma 20 is the correct answer. So Parvi gave it, I think. So the value lies between 4 and 20. Book may be misprint hai, that's why I said it's wrong. Book mein 1 likha. All right, guys. Any doubts, please ask. No, sir. Okay. So next we will do more questions. Yeah. So write which of the mappings in 1.1 are functions. So which of the mappings are function, guys? कौन सी होती हैं बताओ मुझे.
Sir, 1 1 or 1 many? 1 to 1, To 1 One, 1 to many. One many, many, one, and and one. 1 to One many. too many. not many. Or many one is not a function. So these two. तो जो भी ये दो हो, those are my functions. ठीक है? Now, guys, do the ABC part. तो गाइस हर जगह आपको ग्राफ ड्रॉ करने की स्केच करने की जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली टेल द रेंज सो लेट्स स्टार्ट विद रे आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन रे So the answer for first question is -7 is less than or equal to y, and 2 is greater than or equal to y. योर रेंज इज बिटवीन -7 and 2 And 2. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है गाइस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन so Anvi it is -7 and 2 Yes, sir. I've sent the answer of B and C too. okay fine Anvi in the third option बेटा जो smallest होगा वो first आएगा so please correct it all right Anvi Yes, sir. Ray you also made the same mistake So in which one? in the C part beta the one which will be smaller will come first and Anvi your values of C were also not correct So I wrote the smaller one only first. beta -1 is smaller Yes, sir. So -1, so I've तो written आपने first. लिखा है then your values are not correct and then your values are not correct your second value is not correct
Beta, there is a sign for equal to also, Tanish. Instead of writing, you should use the sign. Okay. Yes. Uarsa, you can speak your answers. Uarsa. All right. All right, Ray, now it's correct. So guys, do the DEF part also. Samay, you did not share the e-copy of the book. Yes, sir. Sir, I'll just do that after the classes. Sir, or should I share it right now only? No, after the class is fine. Okay, sir. So what we can do is 1 week we can do additional, 1 week we can do extended. What do you say, guys? Yes. Okay. We have completed 2 exercises. I think इसमें total 7 ही है. Samin, one message, please. Muarsa, you can speak your answers. Then 9 is greater than equal to fx greater than equal to 9. Next one. Next one, 1 by 8 greater to equal than fx greater than equal to 8. Next one. Then 1 by 5 is greater than equal to fx greater than equal to 1. Okay. This one is also correct. So guys, in this one, beta range आपको पता है ना, it starts from the minimum value to the maximum value.
Just writing 9 is less than y is less than 9 doesn't make any sense. आपको minimum value function की निकालनी है. Now minimum value, I have taught you the graph of y equal to x square also. So the minimum value will be from 0 to when x is 3, that is equal to 9. Let's say आपने ग्राफ नहीं बनाया, तब भी आपको दिख रहा है गाइस कि -3 के लिए भी वैल्यू सेम है, 3 के लिए भी वैल्यू सेम है, -2 के लिए भी सेम है, 2 के लिए भी सेम है. सो द मिनिमम वैल्यू विल बी व्हेन x इज इक्वल टू 0. ये तो दिख रहा है हमें. और मैक्सिमम वैल्यू इज when x is equal to 3 or -3. Sir, y is equal to 9. So the range will be 0 is fx is greater than equal to 0 and less than equal to 9. Got it? Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Anvi, keep your camera on. Anvi, have you understood? Next, Yes, let's do the third question. Samay, after doing the question, you can forward the book. Yes, sir. If you get the first one right, you can do the second one also. Fourth one also. Send one by one. Sir, I want to send. Sir, it was a typing error, sir. I corrected my answer. Okay. So, Mr. Uvarsa, thoda sa mistake hai guys. See, when x is equal to 0, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी y will be equal to 2 और g of x will be equal to 2. And if I increase x equal to 1, तब तो ये increase होती जाएगी. y will be equal to 3. So the graph will be, अगर हम इसका ग्राफ देखें, it will be like this. This is your axis. It will start from +2, थोड़ा सा ऊपर lifted होगा. मैंने आपका ग्राफ भी दिखाया था. Whenever it is +2, it is lifted up by 2 units. So if you see the graph, then also you will get this. If you don't see the graph, you just see x equal to 0, y will be equal to 2, x equal to 1, y will be equal to 3. So it will Sir, keep then on will be the increasing. So the range will be from 2 to gx. It's of g of x. So it will be 2 to infinity. Okay. Generally, अगर infinity आता है ना, we write it in the set form like this. ठीक है Sir, I guys? didn't understand. और I can do g of x greater than equal to 2. तो गाइस हम ऐसे नहीं लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं. यस तानिश बेटा,
ने क्या आंसर भेजा मुझे इसका? सर 0 is greater than or equal to बेटा x जीरो कैसे आ रहा है आपका? इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कब आ रही है, आप मुझे बताओ. सो रे डोंट राइट इट लाइक दिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो. ओके, यस. जीरो कैसे आ रहा है मुझे बताओ. Sir, then how will infinity come? इन्फिनिटी तो आ रहा है बिकॉज एक्स की वैल्यू कभी स्टॉप ही नहीं हो रही है. जीरो कैसे आया? जीरो तो मेरा आ ही नहीं रहा. मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आप इमेजिन करो, एक फंक्शन है x² + 2. तानिश, Yes, जब yes. भी एक स्क्वायर फंक्शन होता है, अ स्क्वायर फंक्शंस मिनिमम वैल्यू इज जीरो. अ स्क्वायर फंक्शंस मिनिमम वैल्यू इज जीरो. तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है. तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. अंडरस्टूड तानिश? Yes, sir. अब समझ आया? कोई भी Yes. कभी भी होल स्क्वायर देखो, उसकी वैल्यू विल नेवर एवर एवर नेवर गो इन नेगेटिव. Okay. उसके बाद जो है वो प्लस माइनस हो जाएगा. अंडरस्टूड? Yes. Try the next question, beta. That's why we are doing the questions in class. Confusion will go away, and I will give you the exercise from the workbook from homework for homework. रे, अगर आप इंफिनिटी लिखो ना तो यूज क्लोज कर्व ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, Okay, sir. not square brackets. The answer is also anyway it's wrong. Guys, remember first day हमने ग्राफ किए थे. Whenever anything has added +2 or minus something, ग्राफ में क्या होता था? Remember that. First day we did the graph. थोड़ा सा we'll have to analyze the question and do it accordingly. Uvarsa answer is correct, but and Samay answer is correct, but Uvarsa हम लिखेंगे थोड़ा सा इसको बेटर कर. तानिश, what's your answer? तो बेटर कैसे मतलब? मैं बताता हूँ आपको. तानिश, Sir, what's your answer? sir, You sir, can I speak, don't. तानिश. बेटा देखो ना, Sir, इसको रीड करो. अभी मैंने क्या बताया था? x² की मिनिमम वैल्यू, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x²? व्हाट डिड आई टेल यू? sir, 1. 1 बोली थी मैंने. अब भी जस्ट बोला था मैंने x² की मिनिमम वैल्यू. Sir, किसी भी 2. स्क्वायर की 2 बोली थी. Sir, I don't remember. बेटा अब भी बोला था मैंने 1 मिनट पहले. अनम्यूट करो फर्स्ट Sir, ऑफ ऑल. 0, sir, 0, sir, 0 0. बोली थी मैंने अभी. तो अगर Yes, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? sir, -4. -4. तो रेंज विल बी फ्रॉम -4 इज fx. इसको To ऐसे लिखेंगे. infinity. सो ये यस, सो कुंवर सा इसको ऐसे लिखेंगे, f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4. ओके, सो अनवी, रे, तानिश, अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ गाइस, अगला क्वेश्चन इज लाइक, थोड़ा सा आपको ग्राफ ध्यान रखना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू डू इट. अदरवाइज इट्स सिंपल, अभी भी सिंपल ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टुडे गाइस थोड़ा सा ओवर टाइम करेंगे. विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ओके, quickly guys, be quick, it's Sunday.
Don't trouble me. Give the answers quickly. Anvi, if you are in car, beta, you can keep the camera off. It's all right. समय first greater than sign comes, then equal to sign comes. Yes, sir. Ray, 5 is infinity, so you will use a close infinity. With infinity, you will use a close bracket. But Okay, sir. with 5, you will use a square bracket. Okay, because 5 is included. So brackets change हो सकते हैं when we define the sets. Okay. Tanish, same goes for you. Kuvarsa, you can speak the answer. Sir, what? I will tell you. Kuvarsa, you can speak the answer. Rest kids can give the next question. Mr. Kuvar, please speak the answer. Sir, is it 0 to infinity? 0 to infinity. बेटा सी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आप मुझे बताओ. What, sir? इसकी what will be the minimum value of this? What is the minimum value of this? This is 0. also a square, 0. 0. So it is plus 5. So what will be the minimum value of the function? Plus 5. Yes. So it will be 5 comma infinity. Okay. Okay, sir. Next one, sixth one. Tanish, this was your mistake. This should be a square bracket, okay? Because 5 is included. Yes, sir. Guys, I'll be repeating the same thing over and over again. See the square function. Versad, while writing, the inequality sign comes first, then the equal to sign comes. Okay. Okay, sir. So is my answer right? Yes, it's correct. I was just into the answer. Vanish, it's wrong. So see guys, what is the minimum value of this Tanish? Sir, 0. 0. What is the minimum value of this function then? Sir, minus 5. Minus 5. So it will be fx is greater than equal to minus 5. Mr. Ray, Anvi, understood? Yes, sir. Now guys, next question में domain भी different है. Yes, someone was saying something. Yes. Sir, if x is equal to 0,
Then shouldn't it be 1 minus 5, which is minus 4? Yes, sir. बेटा इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी. मैंने x कब बोला? जब आप x की वैल्यू -½ रखोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू इस स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी. सी यहां पे भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को मार्क किया था. यू अंडरस्टैंड? x कैन बी ग्रेटर देन -½ तो जैसे ही आप -½ रखोगे दिस विल बिकम 0. Yeah, okay, okay. So guys, do the 7th question. Now be careful in this. The square is getting subtracted, so you will have to use your mind. Secondly, the domain is also different. So be very careful in this question. इस क्वेश्चन का आंसर बुक में भी गलत दिया हुआ है. Just checking that. For the 7th question. So all of you will get half marks for this question. And Parvi, and who else? Ray, Poor, and Sami. No one has given me a perfect answer. Sir, I'm correcting my answer. Yeah, guys, आप नोट डाउन कर लो, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है. So when you practice it again, इसका please just note down somewhere and change it in the hard copy of your book. Sir, why is it written F ratio F? Sir, is this the right answer? Now No. it is fine. So Tanish, no guys, it's not fine. Tanish, what's your answer? Sir, I'm not able to understand. So मैं आपसे again I will ask you that when I subtract 7 from this, so this will get its maximum value. Any doubts in this? Correct? Everyone, that the equation's maximum value will be when this is equal to 7. So if I put 7, Tanish, ये बात clear है? Yes, sir. तो क्या होगी minimum value? Keep on unmute. What will be the minimum value of this function? Sir, 10. बेटा 10 कैसे? ये इस बार नेगेटिव में जाएगा. सी देयर इज अ नेगेटिव साइन बिफोर इट. तो जब ये मेरा मैक्सिमम होगा
जब ये मेरा मैक्सिमम होगा, फंक्शन विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू। ये बात क्लियर हुई? जब भी अब मुझे मैक्सिमम करना है, अब मुझे इसको जीरो नहीं करना, अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? और -15. -15 कैसे? Sir, when we will put sir, no, it will be -6. -6. So -6 is the minimum value. Then now if I have to get the maximum value, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए. So what is the minimum value for this? I will write Sir, it will be when x minus 3 whole square is minimum, sir, it will be 9. function will have its maximum value. ये बात क्लियर है गाइस? Yes, sir. अब इसकी मिनिमम वैल्यू गाइस 0 हो सकती है. आई हैव बीन टेलिंग यू होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव नहीं होती है. Tanish and everyone understood? So when you will put x equal to 3, this will be 0 and the maximum value of the function will be 10. Understood? कोई doubt guys? I think सबसे difficult question यही था. Correct guys? Understood? Tanish, understood? बेटा बोलो, ऐसे मेरे से मत करो यार. Yes, इजी sir. है, आ जाएगा. सेकंड टाइम करोगे इजी लगेगा. First time everything is, it's like different. We are talking in different tangents. So do the 8th question. थोड़ा तो लेवल अप हो गई ना. एक्सटेंडेड मैथ्स में तो आई हार्डली यूज टू स्पीक, आप खुद ही कर लेते थे. तानिश, रिमूव द हेडरेस्ट. If anyone is above 60, then I will allow the headrest. What's your age, Tanish? Sir, 13. 30? Sir, 13. 13, okay. Ray, just check your answer. Yes, so the minimum value can be undefined, sir. Also. The minimum value you think what it can be? So it is undefined. No, beta. जो undefined नहीं है उसकी बात ही मत करो, और वो undefined है भी नहीं, because there is a restriction on the domain. ऊपर सा inequality sign पहले. So that's why I tell everyone to unmute. So now Kovarsa unmuted, he is giving correct answers. Tanish has unmuted, now he gave the correct answer. So Anvi and Ray, now it's your chance guys to unmute. I am asking beta, see Ray, ये function define ही नहीं है negative numbers के लिए, because x minus 2 should be greater than equal to 0. For x minus 2 greater than equal to 0, x should be greater than equal to 2. So what is the minimum value of a square root function? 0. 0. So if the minimum value is 0, then the range will be between 3 to infinity. And we got it? Yes. So guys, I want to discuss one thing. You want to practice the same exercises first once again, or should I, the addition in the practice book, the exercises are almost same, just the figures are different, or should I give it from that as homework? मैं मतलब वो तो दूंगा ही दूंगा, but should I tell you to redo this first 2 exercises again? Tell me. So maybe. The practice book, sir. So Practice. everyone will take a vote. Practice book तो करनी है. You want to redo this first, then practice book, or directly practice book? Who are sa? Directly practice.
डायरेक्टली प्रैक्टिस बुक ये छोड़ दे. Sir, poll. First The poll. poll. Okay, it will take time then. 1 second. So I will make a poll. So practice what? Directly from practice book for 1.1 and 1.2. First, from course book. All right, guys. I have given a poll. Save as meeting poll. Sir, we didn't Sir, get by that. the practice book, you mean the additional book one? This one, yes. Practice book is this one. It is slightly different. Sir, we have finished it from the course book. बेटा दो exercises की बात कर रहा हूँ ना मैं. I'm just Okay. talking about 2 exercises. Whoever is left, vote quickly. Otherwise, vote will not be counted. So now it's a tie. So I think first 2 हम redo करेंगे क्योंकि ये start है. उसके बाद आपको लगेगा कि इससे क्लास में कर ही रहे हैं तो there is no need to do, then we'll not. Okay. First I will ask you to redo this. All right, guys, that's all for today. Bye. Bye. Bye, sir. Bye, sir.